Hello everyone, let us talk about control unit. Before talking about control unit, let us see where the control unit is exactly. So for that, just refer this CPU block diagram. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो CPU है वो कंसिस्ट कर रहा है डिफरेंट यूनिट्स को, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट एंड CU. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो CPU के अंदर है. And the control unit is responsible for generating the control signal. It is also responsible for coordinating and controlling the activities of various hardware components. As it connects with all other units, it is a vital component of a CPU. It controls the flow of data between the processor, memory, and input-output devices. The control unit, along with the instruction register, IR stands for instruction register, decodes, interprets the machine language instruction and issues the control signal to make CPU execute that instruction. Let us see the working of this. तो चलिए देखते हैं आखिर में वर्क कैसे करता है. सबसे पहले the CU control unit receives the instruction in the form of binary code, जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है machine language instruction में. Binary code from the memory. It decodes the instruction to determine the specific operation that need to perform. ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को और चेक देखता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. देन इट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है. एंड देन इट सेंड टू द वेरियस parts of the CPU such as ALU, such as MU, such as input unit, such as output unit, and etc. to carry out the desired operation. तो ये पूरा का पूरा आपका वर्किंग हो गया कि ये वर्क कैसे करता है. और let us talk about two basic functions of control unit. First one is sequencing, another one is execution. So inside the sequencing, control unit causes the CPU to step through a series of micro operations in proper sequence based on the program being executed. सीक्वेंसिंग के अंदर क्या होता है, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो अश्योर करता है कि प्रोग्राम किस वे में या किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा. whereas in execution, control unit causes each micro operations to be executed. यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होता है वो अश्योर करता है कि हर माइक्रो ऑपरेशन जो कि आपका एग्जीक्यूट होगा. तो जैसा कि हम लोग एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, सो बिफोर गोइंग टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट, लेट अस टॉक अबाउट हाउ अ प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. A computer executes a program. A program is a sequence of instructions. जो प्रोग्राम है वो sequence of instructions है. A program is executed going through a cycle for each instruction. हर instruction के लिए जो प्रोग्राम होगा वो एक साइकिल के थ्रू जाएगा called instruction cycle. और जो instruction cycle होगा उसके अंदर सब साइकिल्स होंगे such as fetch, decode और execute. और each subcycle has number of steps और हर subcycle के अंदर number of steps होंगे called micro operations. और जो micro operations होंगे उसे ही आप कहोगे atomic operation of a processor. और why is it called the atomic operation of a processor? जैसा कि आपने देखा सबसे पहले प्रोग्राम आया. प्रोग्राम में जब आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग अलग साइकिल था जिसको आप इंस्ट्रक्शन साइकिल कह रहे थे. और इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर आपका सब साइकिल्स था जैसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट. फिर उस सब साइकिल के अंदर आपका नंबर ऑफ स्टेप्स थे और उसे आप कह रहे थे माइक्रो ऑपरेशन है. तो इस प्रकार से जो आपका माइक्रो ऑपरेशन हुआ वो एटॉमिक ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर हुआ. चलिए अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट के. सो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंट्रोल यूनिट में जो सबसे पहला आप देखना चाहोगे वो क्लॉक के बारे में देखना चाहोगे. व्हाई? बिकॉज दिस इज हाउ सीयू कीप्स द टाइम. हियर सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. जो आपका क्लॉक विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, द सीयू कंट्रोल यूनिट कीप्स द टाइम. सीयू causes one micro operation or set of parallel micro operations to perform per clock pulse. जो सीयू आपका कंट्रोल यूनिट है वो एक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करता है या फिर सेट ऑफ पैरेलल माइक्रो ऑपरेशंस हर क्लॉक पल्स पे, पर क्लॉक पल्स. और इट आल्सो समटाइम्स हम लोग क्लॉक को कभी कभी प्रोसेसर साइकिल टाइम भी कहते हैं या फिर क्लॉक साइकिल टाइम भी कहते हैं. Now talking about the instruction register, as we noted, the opcode and the address mode of current instruction in instruction register determine which micro operations are performed. जो आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड किए रहेगा
और उस वो बताएगा कि हमारा कौन सा माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सी बस, जो कंट्रोल बस है उसके बारे में, तो कुछ पोर्शन ऑफ कंट्रोल बस जो की है आपका कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है कंट्रोल यूनिट को, और सिमिलरली जो की है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपका कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता है सीपीयू में, मतलब कंट्रोल सिग्नल्स विद इन द सीपीयू। सो व्हाट डज इट डू? जैसा कि आप जान रहे हो, अगर आपको कुछ डेटा का मूवमेंट करना है एक रजिस्टर से अनदर रजिस्टर, मतलब दूसरे रजिस्टर में, उसके लिए जो कि आपका कंट्रोल सिग्नल विद इन द सीपीयू रिक्वायर्ड होगा। या फिर अगर आपको एक्टिवेट करना है स्पेसिफिक एएलयू फंक्शंस को, सच एज आपका एडिशन, सच एज सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या फिर एक्सेट्रा, तो उसके लिए आपका क्या कंट्रोल सिग्नल विद इन द सीपीयू रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज इट एक्टिवेट द स्पेसिफिक एएलयू फंक्शंस। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंट्रोल सिग्नल्स टू सी बस। जैसे कि आपका कंट्रोल बस से कंट्रोल यूनिट में सिग्नल आ रहा था, सिमिलरली कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल बस में सिग्नल जा रहा होगा। ये किसके लिए होगा? To the memory, to the input output modules. And apart from this all we have flags too. Flag क्या बताएगा आपका, जो कि है आपका करंट स्टेटस या फिर डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ प्रोसेसर, मतलब इस समय प्रोसेसर का स्टेटस क्या है, या फिर कंडीशन कोड बताएगा। एंड द आउटकम ऑफ द प्रीवियस येलो ऑपरेशन, जो पुराना येलो ऑपरेशन था उसका आपका आउटकम क्या है वो बताएगा। So this was all about your block diagram of control unit. Now let us talk about two major types of control organization. So before jumping to them, let us talk about to execute any instruction, the control unit of the CPU must generate the required control signal in proper sequence. जैसे कि हम सब जान चुके हैं अभी तक, स्टार्टिंग से अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल यूनिट के बारे में ज़्यादातर पढ़ लिया है। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल्स को। तो अगर कंट्रोल सिग्नल्स प्रॉपर सीक्वेंस में आपका जनरेट ही नहीं होगा तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो इसीलिए हम लोग दो मेजर टाइप ऑफ टू मेजर टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। इसके लिए देयर आर टू अप्रोचेस यूज्ड फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, जिसमें से पहला आपका रहेगा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और दूसरा रहेगा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो चलिए बात करते हैं हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट के बारे में। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, it is a control unit designed approach in computer system architecture where the control logic is implemented using the fixed and permanent circuit. As the name suggests itself, hardwired control unit. जैसा कि आप जानते हैं कि नाम ही बता रहा है hardwired control unit. Here we will use the dedicated circuits and wiring to execute instruction without the need for any additional program. In hardwired control unit, the control logic is implemented with logic gates, flip-flops, decoders, encoders, and other digital logic circuits. So let us talk about the block diagram of hardware control unit or working of a hardware control unit. First of all, in block diagram, you can see that there is instruction register, instruction decoder. Whatever the instruction came from instruction register, the instruction decoder will decode it. And we have also seen that clock, then timing generator, which is a sequence counter, or we will also called it as step counter. Then a sequence or step decoder is there, which decodes whatever it came from sequence counter, step counter. And after that we have also seen that inputs from system buses, then inputs from flags, and at the end the control signal, whatever is it. So how it's work? As we have all seen that the elements or the components of the block hardwired control unit. Now we'll talk about how it's work. The hardware control unit gets set of inputs from instruction register, flag, clock, system buses, and transform them into a set of control signal. Instruction decoder decodes the instruction loaded in instruction register. Sequence counter provides the separate signal for each step or time slot in a control sequence such as T1, T2, T3, etc. Then after execution of each instruction, the end signal is generated this rest, and then the control sequence counter and make it ready for the generation of control sequence for the next instruction, और ऐसे ही चलते रहेगा।
सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाएगा, फिर सीक्वेंस काउंटर से सीक्वेंस डिकोडर में जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, फिर कुछ आएंगे आपके इनपुट सिस्टम से, सिस्टम बसेस से, कुछ आएंगे फ्लैग से, और ये सब करने के बाद फिर से आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, फिर से एंड होगा, फिर से रीसेट होगा, और ये चलते रहेगा। Let us talk about advantages of hardwired control unit. It is simple and fast. ऐसा क्यों है ये सिंपल एंड फास्ट? जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट से, वो इसे सिंपल और फास्ट बना रहे हैं. It is having high performance as compared to other control units, as well as RISC as implemented with the hardwired control unit. जो RISC है आपका Reduced Instruction Set Computer, वो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है. फिर डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सच एज मॉडिफिकेशन आर वेरी डिफिकल्ट. जो मॉडिफिकेशन होता है आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में, वो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ रीअरेंजिंग द वायर्स. It is just because it uses the dedicated circuit, so it makes it difficult in modification, difficult to correct mistakes or adding new feature. Let us talk about hardwired control unit of basic computer. Before talking to the working, let us see what are the components is having. It is having two decoders, as we can see that इसके पास दो decoder हैं, एक 3x8 का है, एक 4x16 का है. It is having the instruction register जिसके पास mode है, opcode है and address है. It is also having the sequence counter जो 4-bit sequence counter है आपका. यहाँ पे symbol I represent कर रहा है आपका flip flop को, और यहाँ पे कंट्रोल आपका लॉजिक गेट है. सबसे पहले हो क्या रहा है, देखिए 0 से 11 तक जो आपके 12 बिट्स है, फर्स्ट 12 बिट जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल लॉजिक गेट में जा रहे हैं. फिर आपका जो 12 से 14 तक का बिट है, वो आपका डिकोडर 3x8 में जा रहा है, और वो डिकोड होकर आपका 0 से 7 यानी कि टोटल 8 आउटपुट दे रहा है. और वो आउटपुट आपको कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक गेट्स में डायरेक्ट जा रहे हैं. फिर आपका जो मोड बता रहा है 15 बिट का है, वो फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है, और फ्लिप फ्लॉप से होते हुए फिर से कंट्रोल लॉजिक गेट में जा रहा है. सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं जो 4 बिट सीक्वेंस काउंटर है आपका, उसके जो आउटपुट है, जो आपका देख रहे हैं 4 आउटपुट, वो डायरेक्ट 4x16 डिकोडर में जा रहे हैं, और वहां से आपका T0 से T15 तक मतलब टोटल 16 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, और वो अगेन कहाँ जा रहे हैं, आपके कंट्रोल लॉजिक गेट में जा रहे हैं. ये सब के सब आपके कंट्रोल लॉजिक गेट में जा रहे हैं, और अलग से भी कोई एक इनपुट आ रहा है यहाँ पे, अदर इनपुट्स भी आ रहे हैं, और ये सब आपस में जो भी लॉजिक परफॉर्म मतलब लॉजिक दिया गया है आपका परफॉर्म हो रहा है कंट्रोल लॉजिक गेट्स में, और उसका देख आपका कंट्रोल आउटपुट जनरेट हो रहा है. तो इस तरीके से जो पूरा है आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट ऑफ बेसिक कंप्यूटर वर्क करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट. As we have already seen that in our previous lecture, to execute an instruction, the control unit of CPU must generate the required control signal in proper sequence. So for that, there were two approaches used for generating the control signal in proper sequences. First one was hardwired control unit, and the next one is micro-programmed control unit. It is implemented using the programming approach, as the name suggests us. As the name itself is having the micro program, it means that it is implemented using the programming approach. In micro-programmed control unit, the control information or it is also called as the control signal is stored in a control memory. Control memory is programmed to initiate the required sequence of micro operations. जो control memory होता है, it contains the micro program which is a sequence of micro instructions that specify the sequence of micro operation. And if we'll further talk about the microprogrammed, a microprogrammed control unit is a control unit in which जिसके अंदर the control signal, or it is also often known as control information, are stored in a binary form 0 or 1s as control word in a ROM chip called control memory. जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो भी आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो मेमोरी लैंग्वेज, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन था उसको उससे आपको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में जो भी 0 एंड 1 है as control word in a ROM chip are called control memory. Here it is. And each control word in control memory contains within a micro instruction. This all we are talking about inside the micro programmed control unit, isn't it?
The micro instruction specifies one or more micro operations for the system. A sequence of micro instruction is called the micro program. यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का उसे आप माइक्रो प्रोग्राम कहोगे, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले ही देख लिया यहाँ पे. एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स. जो भी आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, जब आप उसे एग्जीक्यूट करोगे तो वहां से आपका सेट ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होंगे. ये हम लोगों ने इसके पहले ही देख लिया था. So this was all about microprogram control unit. Now moving forward, we have the control memory is assumed to be in read-only memory, that is ROM, within which all the control information, that also called the control signals, is permanently stored. We have already discussed about the control memory on the previous page. Now let us talk about the microprogram sequencer. The address where these micro instructions are stored in the control memory is generated by microprogram sequencer with the help of IR, that is instruction register. Let us talk about the control memory or ROM block diagram. Here we have a microprogram inside which the binary bits are there, 0 and 1, and micro instructions are there, that is form of the binary bits, and then it moves with the help of the control word to the micro operations, and here some operations are performed. The task of the microprogram control unit is to micro instruction sequencing and micro instruction execution. As we have seen that the micro sequencer generates the address for the micro instructions according to the instructions stored in the IR. So basically हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं माइक्रो सिक्वेंसर्स की, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर वो क्या कर रहा है, वो जनरेट कर रहा है एड्रेस फॉर ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन according to the instruction जो स्टोर हुए हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. So let us talk about the block diagram of microprogram control unit. It is having IR, instruction register, next address generator, that is often known as microprogram sequencer, control address register, in short it is known as CAR or microprogram counter, then control memory, ROM, that is read only memory, then control data register, CDR, decoder, external inputs, clock, control signals with CPU, control signals to system buses, and further on. So first of all, let us talk about next address generator. The next address generator is called microprogram sequencer, as it determines the address sequence of micro instruction that is read from the control memory. The control then we will further move to the control address register. The control address register CAR holds the address of the next micro instruction to be read, that is microprogram counter. Then we will talk about the CDR, that is control data register, holds the micro instruction read from the control memory. And then we will talk about the control memory. The control memory contains the set of micro instruction. The micro instructions contains a control word that specify one or more micro operations through generated control signals. Then we will talk about when an address is available in control address register, your CAR, then the sequencer issues the read command. As you all can see that the sequencer issues the read command and to the control memory, that is your ROM, read only memory. And after issues of read command, the word from the address location is read into the control data register, and now the content of the control data register or micro instructions generates control signal and next address information. As you all can see that from the CDR, the decoder decodes and the control signals generates, or control signals to the system buses generates, then the next address is being performed and it is again moved to the next address generator. So this all will happen one by one. So now let us talk about the advantages of microprogram control unit. The design of microprogram control unit is simple, less as it is less complex because microprograms are implemented using the software routines.
Thus, it is cheaper too. It is flexible. Flexible because design modification, correction, enhancement is easily possible. The new or modification instruction set of CPU can be easily implemented by simply rewriting or modifying the contents of control memory. Also, complex functions such as floating point arithmetic can be realized effectively. The CISC, it is often called Complex Instruction Set Computer, is implemented using microprogrammed control unit. Now let us talk about the disadvantages of microprogrammed control unit. It is slower than the hardwired control unit because of time required to access the micro instructions from control memory is much higher as compared to the hardwired control unit. The flexibility is achieved at some extra hardwired cost due to control memory, as it required the control memory, read-only memory. The flexibility is achieved at some extra cost as compared to the hardware control unit. Now let us talk about horizontal versus वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत चीजें पढ़ ली हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन on the basis of various parameters such as control signals, decoder, numbers of signals, memory, execution speed, or control word. So first of all, let us talk about on the basis of control signal. Every bit of micro instruction is control signal. If we'll talk about in horizontal micro instruction, as we refer with this diagram, every bit of micro instruction is control signal, is able to generate the control signal based on value of insert bits. Directly control signals are generated. If we will talk about in vertical micro instruction, the bits of micro instruction should be decoded to generate the control signal. Here, if we have seen that every bit of micro instruction have to be decoded for control signal generation. So here a decoder is required to decode the micro instructions, but here no decoder is required. So hence on the basis of parameter of decoder, in horizontal micro instruction no decoder is required, but in vertical micro instruction a decoder is required. Now on the basis of number of signals, if we'll talk about the number of signals in horizontal micro instruction, multiple in one instruction, as you can see that here every bit is itself able to generate a control signal, but here a micro inside the vertical micro instruction, the bits are coming together and decoded, then it generates a single control signal. If we'll talk about the memory, then here more memory for more control signal, but here less memory because it is in the combination, so it can have less memory to generate the same signal, but it may have the more memory to generate the more signals. If we'll talk about the execution speed, it is very fast. It is just because every bit of micro instruction is itself generate the control signal, but here it is slower because it is going through the two steps. First, the micro instruction with the help of the every bit of micro instruction should be decoded to generate the control signal. So it is going through the decoder, then it generates the control signal. And if we will talk about the control word, it is having the wide control word. If we'll talk about the horizontal instruction micro instruction, it is having the wide control word. If we'll talk about the vertical micro instruction, then it is having a short control word.